इसको ड्रॉप नहीं, इसको गैप बोलते हैं. एंड गैप इज ऑलवेज अ डार्क मार्क. आई टेल यू व्हाट, अगर आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है, एज इन अगर आपको कोई अच्छा जॉब मिला, अच्छा प्रोजेक्ट मिला, अच्छी इंटर्नशिप मिली, या ऐसा कोई प्रोजेक्ट मिला जो कल को अगर आप किसी और के सामने शोकेस कर सकते हैं, देन आई थिंक यू शुड टेक. नंबर वन. नंबर टू, प्रिपरेशंस. अब आप देखिए, कैट, मैट, वॉट एवर यू वांट टू राइट, प्रिपरेशन इज ऑन यू, नॉट ऑन अस. मार्क्स आर ऑन अस. पिछला क्वेश्चन था एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर में. सपोज यू वांट टू टेक 1 year gap and want to become an entrepreneur. Please go ahead and show some result. Tomorrow, this 1 year gap will be counted in saying कि मैंने 1 साल अपना यहाँ invest किया. So the word here is investment in order to cover the word gap, right? Drop is not the right word again. Today, if you are being given a job by any company, they like to know आप हो कौन और आपको आता क्या है. If there is something substantial enough for you to showcase, take it. If not, continue learning. So if you have taken a drop and you don't have a substantial backup for it, you're still not a graduate. See, if you do 12th standard and after that you drop your education in the second year, what will you be called as? 12th pass or second year graduate? 12th pass. That is what you're talking about.